Hey everybody, this is Dr. Vani from Biotonic today with a very personal, heart-touching and my own personal story with you. How I lost all motivation and how I recovered. I hope जब मैं ये story आपके साथ share करूँ, you will get some courage, you will get inspired from my story and you will be able to use whatever wisdom I have to share in your own life to overcome your episode of lack of motivation. I remember जब मैं लक्ष्य में काम करती थी, that was with the founders close to 10 years ago. I was very motivated because बड़ा inspirational, बहुत ही मजेदार, बहुत ही dynamic काम था. I just started to teach and I immersed myself completely into teaching. लक्ष्य से I went to Mahesh Tutorials because Mahesh Tutorials MT Educated acquired लक्ष्य. And there when I joined MT, we had one center. By the time I left MT Nasik, it was 5 centers. It was an organization which gave me a lot of love and respect. I had thousands of students across 5 centers whom I used to teach. I became the lead of biology there and life was just so super amazing. But उसके बाद जब मुझे छोड़ना पड़ा MT because I was moving to another place, तो जिस जगह मैं जा रही थी वो एक बहुत छोटा गांव था नीलगिरी माउंटेन्स में तमिलनाडु में, and I had absolutely no work there. बिल्कुल काम नहीं था. That is one time that I lost all my motivation because पिछले 5-6 साल से मैं regular काम कर रही थी. I was loving my job. I loved being a teacher. It gave me so much high in my life. I loved teaching. I had given my entire life to teaching. I was feeling so motivated. But suddenly because I had to shift to a small little place जहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी institute नहीं था और तब online के बारे में किसी ने सुना ही नहीं था. And Vedantu was just starting और मेरी आनंद सर से बात हुई because I had been working. My first job interview was taken by आनंद सर and I was a part of Lakshya. And आनंद सर ने मुझे कहा कि आप वेदांतु में आ जाइए. But तब वेदांतु भी इतना छोटा था. We had 1-to-1 students. हम बच्चों से बात करते थे. I used to design my own content और हम 1-to-1 classes लेते थे. तो कहाँ पर मेरे पास 5-6 centers की responsibility, एक सेंटर में हजार बच्चा, कहाँ I was looking after 5,000-6,000 students to one child 1-to-1. It was मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था और मेरे को ऐसा लगा कि कहाँ मैं इतना कुछ मैनेज कर रही थी उससे आज मैं वेदांतु पर आ गई और वो कितना छोटा था. I was feeling very sad but I did not let that happen. मैंने कैलकुलेट किया कि अपसाइड क्या होगा और डाउनसाइड क्या होगा. डाउनसाइड क्या होगा, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाने की जगह मैं कुछ छोटे से बच्चों को पढ़ा रही हूँ. कहाँ मैं वेबिनार सेमिनार लेती थी, पूरे हॉल्स फुल होते थे. आज मैं एक बच्चे को सिर्फ कैमरा पे पढ़ा रही हूँ, नो प्रॉब्लम. एटलीस्ट आई एम टीचिंग, एटलीस्ट आई एम डूइंग व्हाट आई लाइक. आई रियली लाइक. डाउनसाइड क्या है, कुछ नहीं होता. जहां इंपैक्ट बहुत ज्यादा था मुझे तब ऐसा लगा कि शायद इंपैक्ट कम हो गया. नॉट टू रियलाइज दैट करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान रस भी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, कि कहां पे वो एक बच्चा वेदांतु में आज इतना मैसिव बन जाएगा कि लाखों बच्चे साथ में पढ़ेंगे. सो रिमेंबर, इट्स व्हेन यू लूज ऑल योर मोटिवेशन यू हैव टू थिंक ऑफ द बिगर गोल. मेरे लिए हमेशा बिगर गोल सिर्फ टीचिंग रहा है. मेरे लिए हमेशा बिगर गोल हमेशा ये रहा है दैट हाउ मच कैन आई कंट्रीब्यूट टू अ चाइल्ड्स लाइफ, राइट. तो अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो, यू कीप योर बिगर गोल इन माइंड, यू थिंक कि अगर आपको एक साल रिपीट भी करना पड़ रहा है तो उसका अपसाइड क्या, आप डॉक्टर बन के निकलोगे तो क्या हो गया. डाउनसाइड इज वन, you're not now there but you will be able to do it. So you have to find out what is it that you like, what is it that you love, what is it that you want to do for the rest of your life, and you will get your motivation back. That's all from my side today. I hope this personal story truly helped you. Take care, lots of love. Don't forget to become a part of Biotonic. Bye.